hearts away. Welcome, we welcome you to our annual day today. We want to bring a smile upon your face. We want to see a twinkle in your eyes. We want to thank you for your love and care. Thank you for always being there. Welcome, we welcome you. We have come today to take your hearts away. Welcome, we welcome you to our annual day today. We want to take you to our little world with hearts full of laughter, happiness and joy. We want to share our happy world with you. We want to say we love you too. Welcome, we welcome you. We have come today to take your hearts away. Welcome, we welcome you to our annual day today. To our annual day today. To our annual day today. Very dear parents and guardians of our little precious children, in the name of the management, staff and students of our school, a very warm and affectionate welcome to each and every one of you on this special day as we keep the annual day of Auxilium Girls School of the junior section, nursery to class 2. Auxilium Girls School started just 13 years ago with 43 students, has now grown into a large family catering to almost 1,800 students. I'm sure some of you must have witnessed a mesmerizing show of our students of class 3 and 12 last Saturday, November 7. Since we give chance and encourage all our students to participate and not merely selected talented few, we found it difficult to accommodate all our students at one go. So we thought of dedicating this day for you, dear parents and guardians of these little precious angels. To grace this day, we have with us as our special guest and invitees, a principal, 2 lawyers, a scientist, 2 doctors. It's a great privilege to have you with us today. Let me have the joy of welcoming among us Mrs. Laltanjwali Haunar, Principal of St. Paul's School, Agartala, as our chief guest. And my dear friends, parents and guardians and all of you present here, we are also immensely happy to welcome our guests of honor who are with us this morning, Mrs. Juman Jatta Chowdhury and Mr. Deeman De Burma. They are from the Department of Law, Government of Agartala, who are also the parent of one of our students, Kavya De Burma. We have with us Mrs. Jansi Sriveni, a scientist, A-grade scientist working in DRDO, Defense Research Development Organization, Bangalore, Dr. Regina Rankol, Medical Officer, Tripura Health Services, and Dr. Jaleshwar Chakma, Deputy Commandant Medical, Shastra Simabal, Sonapur, Assam, who are also the parents of one of our little students from nursery, Giovanna Chakma. Thank you, dear guests of honor. Your presence is indeed a blessing and honor for our school and for all our little children. May I request the students to welcome our guests of honor. And all of you, dear parents and guardians and others, kindly, my dear parents and guardians, I would really love to felicitate you, all of you, individually and personally, to who have come to witness, encourage and bless your children and also our children. You have been busy all the while. These moments of relaxation, as you witness the performance of your children, will rejuvenate you.
I wish you pleasant, enchanting, and memorable moments as we welcome all of you with a very, very warm and affectionate round of applause for all our parents and guardians. Please give a nice round of applause. According to Don Bosco and Saint Mary Massarello, our founders, the parents are our great benefactors and partners in our educative mission. Thank you for the trust that you have in us to entrust your precious treasure, your children. During this year, you already had the chance of coming to Auxilium and seeing how your little ones are growing, be it during the Auxi Ignite or our school exhibition or the open day. Today is another occasion for you to witness the cultural gifts and the talents of your little children. You see, even the little children of nursery, all of them on the stage today. I want to tell you that your children are very smart, beautiful, and very loving and affectionate. I call them digital children, able to grasp things far beyond their understanding and to express it so well. You even saw the little ones, the way they are anchoring and comparing. Very expressive they are, much more than we used to do when we were at their age. They are so familiar with any technology and they can face any situation very bravely and very fast too. In the school, when they give the assembly addressing the entire school, I used to be amused and spellbound at their confidence and courage to face any audience. So be happy with your children. Tell them that they are smart. Tell them that you are happy with them. Tell them that they are great, that you are proud to have such a wonderful daughter here and also son. Then they will be proud of you. They'll say, my parents are so good. I love my parents so much. This is what. You give them positive, they will also give you positive. That's what we need to do. My dear parents, we really are committed here. Auxilium really loves the children. We spend all our time with them. Even holidays, we are fully for them. We are committed to make. You just look at the development of this school during these past years, how it has developed. Just 13 years, and we have such a beautiful school. Look at this auditorium, so nice. Today you can simply enjoy. We have a nice dream. We'll have a beautiful curtains. This will be an AC hall. So if you have summertime, you can enjoy yourself. We will have a lot of these table tennis, children can play, and they have a lot of chances. Or you can go and see also our labs, our playground, and all the other things, all because we love your children. We have so much of dream for them. We want to give them best. So help them, bless them, that they may grow in age, in grace, and in wisdom, and become great. We want you to put strong foundation of values and virtues so that they will be empowered, strong, and capable of shouldering responsibilities and becoming great. Once again, a very warm and hearty welcome to each and every one of you, dear guests, invitees, parents, guardians, little children, and to everyone. A special round of welcome to every one of you. Please give a nice round of welcome. Please feel happy. This is your school. It's your home. Your children's home. It's also your home. And have an enjoyable time with our little children. We are delighted, grateful, and honored to have you with us. God bless you, and thank you so much for coming. Thank you.
Bingo na sing dei tang de khok leng khon ma si khe Ha bingo na sing dei tang de khok leng khon ma si khe Haya na salte le le hugo thang ma si khe Shipping khon ma si khe Ha bingo na sing dei tang de khok leng khon ma si khe Bingo na sing dei tang de khok leng khon ma si khe Haya na salte le le hugo thang ma si khe Shipping khon ma si khe Nini de le le shaha bineri wana ha bingo shahare Nini de le le shaha bineri wana ha bingo shahare Langa dingera no no wa we diwana Hazo ni surang no no very diwana Hai dia laki no no very diwana Hai dia laki no no very diwana Haya na salte le le hugo thang ma si khe Shipping khon ma si khe Guiding le kululu Night home yalulu Ani guiding go phaidi Guiding le kululu Night home yalulu Ani guiding go phaidi देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गमा फसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले
सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। It is extremely pride to mention that this esteemed educational institution was established only 1 decade back with the object of imparting girls' child education irrespective of caste and creed. The school have achieved commendable progress in all spheres, academically as well as infrastructurally. We as parents and guardians are proud to be part of this big family. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day the Lord has made, so let us rejoice. It's a beautiful day. A beautiful day. It's a beautiful day. A beautiful day. Let us celebrate together, thanking God for one another, for the gifts we are to each other. With grateful hearts, our praises we bring. Let us celebrate together, thanking God for every favor, for the gifts and all the blessings. With grateful hearts, our song we will sing. You are a gift, a wonderful gift, given to us from above. You are a gift, a wonderful gift, so let us give thanks. To our wonderful God. Our wonderful God. He's a wonderful God. A wonderful God. Celebrate together, thanking God for one another, for the gifts we are to each other. With grateful hearts, our praises we bring. Let us celebrate together, thanking God for every favor, for the gifts and all the blessings. With grateful hearts, our song we will sing. We want to thank you, God, with a heart so true. We want to thank you, God, for everything you do. It's a beautiful day. 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 It's a beautiful day.
पी के फिर से आए, पर इस बार उसका मकसद कुछ और ही था। वे इस बार आए शिक्षा की जोत जलाने, गरीब बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने। पर क्या वो कामयाब रहा? भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई नई राहों पे, जाना मुझे दूर कहीं, कांधे पे ख्वाहिश कहीं, सपने निगाहों में। किसको पता किस मोड़ पर कोई अजनबी मिल जाएगा, दिल को मेरे छू जाएगा, हंसाएगा रुलाएगा। डिंगा 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 रे, डिंगा 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 रे, डिंगा 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 रे। बेटा बेटा जरा रुको। बेटा ये बताओ क से क्या होता है? क से काम होता है। बेटा बेटा जरा रुको। बेटा मुझे ये बताओ म से क्या होता है? माँ से हाँ, माँ से मेहनत होता है। नहीं नहीं, माँ से मजदूरी होता है। तुझे तो कुछ नहीं पता, चल यहाँ से। हमारे यहाँ बेटियां धीरे धीरे अपनी माँ जैसी बेनूर हो जाती हैं। न अक्षर ज्ञान, न स्वमान, न सवाल पूछने की हिम्मत, न जवाब देने की ताकत। बस चुपचाप रहो और सहो। किस्मत में नहीं मेरी, प्यार क्यों किसी का। बुलबुल मेरे बता क्या है मेरी खता, किस्मत में नहीं मेरी, प्यार क्यों किसी का। बेटा जरा रुको। बेटा मुझे ये बताओ तुम लोगों का घर कहाँ है? घर रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर। हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। क्या हम बदल नहीं सकते इस सिस्टम को? क्या देश की सेवा करना सिर्फ मंत्री और मिलिट्री वालों का ही काम है? नहीं, हम आम आदमी के लिए सब कुछ मुमकिन है, अगर हम चाहे तो। मैं ऐसा नहीं कहता
कि आप राह चलते हर एक की मदद करो, पर एक का मदद तो आप कर ही सकते हो ना। सोचिए, अगर आप एक बच्चे को भी शिक्षित कर देते हैं तो यहाँ बैठे सभी कितने सारे बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे। करके देखिए, हर एक बच्चे की मुस्कान से आपके दिल में कितनी ठंडक पहुँचती है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं फिर से आऊँगा कोई और मसला हल करने के लिए। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
I thank and congratulate Principal Celine Decuna and her entire team who are trying hard in achieving that. Speaking about inspiration, I feel Sister Celine Decuna and other sisters of this school who have come from other states are the biggest source of inspiration. They have come here to teach, to learn, to be good human beings, which is the most important thing in life. Feel the sacrifices they have made and making in fulfilling the desires of others. A big salute to them. Lastly, I would say respect your parents, teachers, friends, neighbors, and spread the message of love and love only. Thank you. Thank you.
behavior. And if you like fish and grits and all that, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that, everybody let me hear you say, oh yeah. I have been associated with this institute for the past few years, and I have always observed the happenings and events of this school with a lot of interest. From my experience, I can tell that there is passion for perfection and commitment in everything that happens in Auxilium. I take this opportunity to congratulate Sister Celine and entire Auxilium family for demonstrating courage in setting benchmark and the noble endeavor of providing quality education in all respects for the children of Tripura, the daughters of this land. I pray that the children of this school be of exemplary character and stand ahead of the crowd in various fields, and especially with the touch of humanity. जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा फोटो से पप्पी ले जा तू अभी मिलूंगी मैं न दोबारा जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा फोटो से पप्पी ले जा तू अभी मिलूंगी मैं न दोबारा लश्कारा जान लेना चाहवे बलियत मुखड़त दिल ललचावे लोग दा पे लश्कारा जान लेना चाहवे देखे बिना देखे तेनू राह भी न जावे रूप सलोना तेरा सोना चंगदा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा ना रंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा दुपट्टा तेरा ना रंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा
responsibility is it to take care of our common home, the earth? The Bible tells us in Genesis that God created the heaven and the earth, that God created man, and he gives him the responsibility to take care of all that he has created. So it is the duty of man, it is our duty to take care of what God has already created. So today, I am happy that the school is trying to reach out to respectable citizens, to create an awareness, to make us conscious that if we want to continue having a healthy earth, it is now time to take care. It is now time to be conscious. And I hope what the school aims to make us aware, what the school aims us to reach out with to us, is a success in taking care of the creation that is in our hands, in taking care of what God has given us the responsibility, so that our children, our grandchildren will have a healthy place to live in. Thank you so much. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. भारत एक ऐसा देश है जिसमें जातिवाद और भेदभाव नहीं है। यहाँ लोगों के बीच एकता की भावना है। भारत को इसीलिए स्वर्ग जैसा देश कहा जाता है। आज हम इसीलिए इस भारतवर्ष पर शांति से रह पा रहे हैं क्योंकि सैनिकों ने अपना जीवन भारत भूमि के लिए कुर्बान कर दिया। न जाने कितने ही माँओं ने अपने बेटे खो दिए, कितने ही बहनों ने अपने भाई खो दिए और कितने ही पत्नियों ने अपने सुहाग तक को खो दिया। आइए अब हम सैनिकों पर आधारित एक नाटक का मंचन देखते हैं। सब्जी आपके लिए हेडक्वार्टर से सूचना आया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर की सीमा पर हमला बोल दिया है, जिस कारण जो सैनिक छुट्टियों में गए हैं उन लोगों को वापस बुलाया गया है और अपने अपने यूनिट में वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अच्छा सुधा, अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? हाँ, मेरे देश को मेरा जरूरत है। ठीक है, जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई है जो आपका इंतजार करती रहेगी। समझा करो मुश्किल मेरी, चाहूं न चाहूं मुझको जाना ही होगा। पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं। ये क्या बात है? कल हमारा जन्मदिन है और तुम चल दिए। एक दिन रुक जाऊंगी। I'm sorry. Orders in order.
अगर तुम गए तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और आज के बाद हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। हेमा, जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। बोले सोनिहाल, जय श्री अकाल। जय भाई गुरु जी का खालसा, जय भाई गुरु जी की हेलो कमांडो, भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त कर ली है। जय हिंद। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
है जहाँ विश्व और अमृत भी। हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा इंतजार है। मन वो मंथन तलवार जब वो लहराए, चंद्र में मस्तक हो जाए, शत्रु दल ये सोच न पाए जाए बच के कहा जय महेश्वरी है भाग्य विधाता मौला, साथी कहलाता ऐसा अद्भुत वो राजा सबका मन जो जीते। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।